Hello dear students and welcome to EduTap. So guys, NABARD Descriptive English paper is just around the corner and I'm sure you might be looking for some relevant sources to prepare for your essay writing, Precis writing and letter writing as well. So guys, in this session, see earlier last week I took a session on how to write an essay like a pro and all of you watched it. So I'm really thankful to that and I hope that helped you in your preparation. Now today we are going to learn about how to write a Precis like a pro. Now, Precis writing is an integral component of your exam, and it holds a lot of weightage for your exam as well. So, if you're preparing for NABARD descriptive English part, this is for you. But guys, before we go any further, I would like to inform you about the comprehensive guidebook that we have launched for NABARD Assistant Manager post. Now, this guide contains everything from pattern to syllabus to strategy to prepare for your NABARD Grade A exam, both for phase 1 as well as phase 2. Now, this exam is everything ranging from cutoff, previous year questions, strategy, then what are the sections to focus upon, what should be your timetable, the formula for success. So, everything is provided to you in this course book, and this course book, this guidebook is absolutely free of cost. So, you can download this guidebook from the link given in the description of the video, or the link is also given in the comment section of the video as well, guys. So, go download it. This is absolutely free. So, you'll get to know everything about your NABARD grade A exams, and it also includes previous year questions since 2018. सो 2018 से लेके 2025 तक जो 24 तक जो भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं फेज 1 एंड फेज 2, नॉट जस्ट फॉर इंग्लिश, फॉर एवरी सब्जेक्ट, बी इट क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एआरडी, ईएसआई, एवरी पीवाईक्यू इज गिवन टू यू इन दिस. सो डाउनलोड इट, यूज इट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बेनिफिट योरसेल्फ गाइस. चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस. लेट्स बिगिन विद द वीडियो. So guys, in this video, first of all, I'll show you the actual passage that was given to the previous year aspirants in the year 2024. So guys, first we will see what what passage was given in the exam, and then I'll show you what should be a sample answer to that to that to that question. Then we are going to jump towards art of Precis writing, what Precis writing entails, what it is all about. Then we will look into the time management part, right? What time should be allocated for your Precis writing? Then what are the key mistakes that you have to avoid in your Precis writing? And then I'll also provide you a sample Precis to practice Precis on your own. So I'll provide you a passage and then I'll provide you a sample solution. You can try your Precis on your own and then you can compare it with the sample answer that is given. So without any further ado guys, don't forget to like the video and don't forget to subscribe if you're here for the first time. चलिए guys, तो शुरू करते हैं. First of all guys, this was the previous year Precis that was given in the NABARD exam. So guys, the Precis was basically based on Ethiopia's rainwater harvesting crisis. So there is a crisis going on in Ethiopia, which is basically a non-availability of agricultural and potable water, right? So what Ethiopia is doing to fight this crisis. So that was the basic passage, and you were mentioned that you had to make a Precis in 120 words. You see guys, usually a Precis in NABARD is minimum 150 to 170 words, but just to surprise the aspirants, what they changed last year was they gave a Precis on the in 120 words, but the weightage was same, 30 marks. So just imagine guys, you just have to write 120 words. 120 words is not even a paragraph guys, right? It's a short paragraph and you can score at least 21, 22 if you write a good Precis out there. So let's first read the passage. I'll show you the sample answer and then you'll have a better understanding of what Precis writing entails. So let's read the passage together here guys. Now, this was the actual passage that was given in the exam last year guys. So Ethiopia is turning to alternative water sources including pond water harvesting as a crucial strategy to cope with widespread water scarcity. Alongside traditional rooftop water harvesting, pond water collection is emerging as a vital source of potable water in the country. Now, according to recent reports from Ethiopian Water Project, only 42% of the population has access to clean drinking water, with a mere 11% having access to adequate sanitation services. Over the past 2 decades, droughts have severely impacted many regions, leaving ponds, wells, and streams either dry or dangerously shallow. For millions of Ethiopians, especially those in rural areas, shallow water sources are often contaminated by human and animal waste, parasites, and disease causing organisms. As a result, waterborne illnesses like cholera and diarrhea are leading causes of death among children under 5. The daily struggle to collect water has also contributed to low school attendance, with only 45% of Ethiopian children enrolled in
primary schools. Many rural children spend their day fetching water from distant springs, small streams, and shallow wells, leaving little time for education. To address these challenges, the Ministry of Water and Energy launched the National Rainwater Harvesting Initiative, My Dam at My Door. That was the project. The project has expanded access to clean water across the country, reaching nearly 70% of the population. Abra Adunga, the State Minister for Water Resources Management, reported that over 4 million people have gained access to clean water through the initiative, bringing the total to 74.6 million people. With the national clean water coverage now at 69.52%, significant progress has been made in drought-stricken areas. The initiative is helping Ethiopia reduce reliance on depleting groundwater tables and failing piped water systems. Now, Adunga emphasized the benefits of rainwater, noting its suitability as an alternative water source, especially when underground water and traditional water supplies are polluted or unreliable. Now, rainwater provides a solution when water quality is compromised during the rainy season or when traditional water sources are far from communities. Water supplies can become polluted due to industrial or human wastes or by intrusion of minerals such as arsenic, salt, which are found in downstream area, or fluoride in the Rift Valley. Roof water is generally of good quality, he stated. Collecting and storing water near households improves accessibility and positively impacts health. A study by the Ministry of Water and Energy found that Ethiopia is better suited for rooftop water harvesting over the pond technique, with over 95% of the country being viable for this technique. In contrast, only 57% of Ethiopia is suitable for pond water and water harvesting, with areas receiving less than 200 millimeter of annual rainfall being particularly challenging for the latter method. Now, as Ethiopia continues to battle water scarcity, rainwater harvesting remains a critical component of its strategy to provide clean and suitable water for its people. So guys, this was the passage that was given to the aspirants during the last year, and let's look at the sample answer for this first. Now, the solution is that first you have to give a title to a Prezi, guys, and then you write the Prezi in one paragraph itself. So the title was Addressing Water Scarcity in Ethiopia, the Shift to Rainwater Harvesting. That was the title. So that was the highlight, the gist of the passage. Now let's see how to frame a Prezi on the passage. Now, Ethiopia is increasingly adopting alternative water sources, particularly rainwater harvesting, to combat widespread water scarcity. Many people lack access to clean drinking water, and traditional sources are often contaminated or unreliable due to droughts. To address this, the Ministry of Water and Energy has launched initiatives that have significantly improved access to clean water for millions. While both rainwater and pond harvesting are explored, studies indicate that rooftop rainwater harvesting is more suitable for the country's geography. This method not only enhances accessibility but also promotes health and sustainability. Overall, integrating rainwater harvesting into water management strategies is crucial for ensuring clean and reliable water sources for Ethiopia's growing population. So guys, you have to basically, you have to get the crux out of the passage. You have to basically, get to the gist of the passage, the underlying message that is conveyed by the passage, the underlying theme of the passage, and that is to be presented in your own words. So every important part of the passage, the crux of the passage, was taken and presented in your own words in a formal language, in a third person perspective. That is what a Prezi is all about. Now let's see what Prezi writing entails, guys. So now let me explain to you what Prezi writing is and how do we learn how to frame a Prezi. So guys, Prezi hoti kya hai? First of all, let's understand the definition of a Prezi, guys. A Prezi, please read it very carefully, guys. A Prezi is a clear, compact, condensed brief of a passage. So it's a brief of the passage by exclusion of unimportant text. Guys, exclusion of unimportant text से मेरा क्या मतलब है? आपने अभी नोटिस किया जो वो सारी डिटेल्स थी 47 69.52%, 70%, 40%, ये सारी डिटेल्स वहां से स्किप कर दी गई थी. Only the core point was mentioned in the Prezi. Did you notice that? कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं मेंशन किया गया. जैसे वो अडुंगा वाला नाम था जो उनके स्टेट मिनिस्टर थे, उसको कोई जिक्र नहीं है प्रेसी में. तो यही आपको समझना है कि जो अनइम्पॉर्टेंट, जो इलेबोरेटिव पार्ट है उसको एलिमिनेट कर देना और सिर्फ जो कोर आइडिया है उसको अपने साथ रखना. That is what Prezi writing is all about. So Prezi writing is a clear, compact, condensed brief of a passage by exclusion of unimportant text and filtration of key points in writer's own words. ये याद रखना guys, this is what Prezi is. Filtration of key points
and presenting them in your own words. That is what Precis writing is. You cannot copy and paste sentences from the passage. Obviously, the idea has to be same, but you have to use your own language, your own presentation skills, your own words, your own synonyms, your own presentation of language. That is what is needed. That is what they're looking for, originality. So Precis writing is regarded as a very important kind of composition because it develops one's capacity to discriminate between the essential and the नॉन essential. ठीक है, यही आपको समझ आता है, इसी से पता लगता है कि आप essential और नॉन essential के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. नाउ हाउ डू यू क्रिएट अ प्रेसी गाइस? बड़ा ही लॉजिकल तरीका है गाइस. मैं आपको एक सिंपल लॉजिकल तरीका पता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जब उनको फ्रेम करने लगते हैं ना प्रेसी में, तो वो वर्ड लिमिट फॉलो नहीं हो पाती. एक पॉइंट को हम ज़्यादा एलैबोरेट कर देते हैं, फिर बाद में इतनी स्पेस नहीं बचती कि बाकी पॉइंट्स को डिस्कस कर पाए. तो उस सब के लिए हमें क्या करना है गाइस? आप एक काम करिए, कीजिए गाइस, आप अपने एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स, एवरेज वर्ड्स पर सेंटेंस, एक बार वो काउंट कर लीजिए. सो एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पर सेंटेंस, आपने ऐसे लिखे होंगे, अपने ऐसे में जाके एक बार काउंट करिए कि ऑन एन एवरेज आप एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स लिख रहे हैं. लेट्स से आप 15 to 16 वर्ड्स लिख रहे हैं, या 12 to 13 या 18 to 19 वर्ड्स लिख रहे हैं, जो वो दैट इज सब्जेक्टिव, वो आपके अकॉर्ड हर एक का अलग अलग होता है. तो आप अपने एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कीजिए. लेट्स से आप 15 वर्ड्स पर सेंटेंस लिख रहे हैं, राइट? एवरेज की बात कर रहा हूँ. लेट्स अज्यूम यू आर राइटिंग 15 वर्ड्स पर सेंटेंस, राइट? सो 15 वर्ड्स अगर मुझे पर सेंटेंस लिखना है, और अगर मेरे को मान लो वर्ड लिमिट मिलती है 150 वर्ड्स की, या 170 वर्ड्स की, या 120, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मुझे 150 वर्ड्स लिखने, तो मुझे समझ आ रहा है कि मुझे लगभग लगभग 9 to 10 सेंटेंसेस लिखने हैं. नाउ इफ आई कैन काउंट दिस, इफ आई कैन कंट्रोल दिस, कि आई हैव टू राइट ओनली 9 to 10 सेंटेंसेस, देन आई विल हैव अ बेटर क्लैरिटी कि मुझे कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और कितना उनको वेटेज देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है अपनी प्रेसी में, और किन को इंक्लूड नहीं करना है. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कंट्रोल. आफ्टर यू हैव डन दिस, अब आपको समझना है कि प्रेसी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे फ्रेम किया जाता है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज टू प्लान एंड आउटलाइन द ओरिजिनल पैसेज. जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसको प्लान और उसको आउटलाइन करो. कैसे? लेट्स से आपको 8 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, और आपको समझ आ रहा है कि मुझे टोटल 10 सेंटेंसेस बनाने हैं. तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि यार एक मेरा टाइटल हो गया टॉप पे, फिर एक मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया, फिर बीच में मेरा सारे के जो 8 सेंटेंसेस हैं, जो 8 पैराग्राफ्स है, लेट्स से अगर मैं हर पैराग्राफ से एक सेंटेंस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी निकालता हूं, एक सेंटेंस निकालता हूं, तो 8 पैराग्राफ से मेरे हर पैराग्राफ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया, तो कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस भी नहीं होगी. और एंड में मैंने कंक्लूजन स्टेटमेंट दे दिया, तो टोटल हो गए 10 सेंटेंसेस, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, बाकी सारे 8 सेंटेंसेस फ्रॉम द पैराग्राफ्स, और एक सेंटेंस कंक्लूजनरी. हो गए 10 सेंटेंस, एंड दैट मेक्स माय प्रेसी. तो इस तरह से आपको उसको कंट्रोल करना है, आपको पहले प्लान करना है, आउटलाइन करना है अपने पैसेज को. तो अकॉर्डिंगली उसको ना काउंट कीजिए. पहले 6 पैराग्राफ्स हैं, या 8 पैराग्राफ्स हैं, या 7 पैराग्राफ्स हैं, पहले वो देख लीजिए. फिर ये देख लीजिए आपको कितने सेंटेंसेस लिखने हैं अपनी प्रेसी में अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट, और उसके अकॉर्डिंग चूज करिए कि कौन से सेंटेंसेस को वहां पे यूज करना है, कौन से सेंटेंसेस को वहां पे यूज नहीं करना है. दैट इज द आउटलाइन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइस, ऑलवेज रिमेंबर कीप द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पैसेज इन योर प्रेसी. प्रेसी में सिर्फ पूरे पैसेज की जो अंडरलाइंग थीम है, जो जिस पर्पस से ऑथर ने वो पैसेज लिखा है, इस जैसे अभी हमने एक पैसेज पढ़ा, अगर आपने वो सारा सुना पढ़ा ध्यान से मेरे साथ, तो आपको समझ आ रहा है कि पैसेज में क्या बात हो रही थी कि इथियोपिया में वाटर क्राइसिस है, उसको फाइट करने के लिए उन्होंने नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, नए नए मेथड्स यू ट्राई कर रहे हैं. जैसे एक पॉन्ड हार्वेस्टिंग हो गया, एक हो गया अपना रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. उसने रीज़न बताया ऐसे वो क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत सालों से ड्रॉट आ रहा है और लोगों के पास पीने का पानी या नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में पानी यूज़ करना है वो है ही नहीं अवेलेबल. बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको उनको पानी लेने जाना पड़ता है दूर दराज एरियाज में. इसी सब को मद्देनजर रखते हुए इथियोपिया के जो गवर्नमेंट है उन्होंने रूफ टॉप हार्वेस्टिंग को एक नया इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया है माई डैम एट माई होम, कि मैं अपने घर पे ही अपना डैम बना रहा हूँ, अपना पानी सेव कर रहा हूँ. तो उसने नाम भी दिया इनिशिएटिव का. फिर उसने बताया इस इनिशिएटिव में क्या होगा कि आप रूफ टॉप पे जो लोग पानी सेव करते हैं उनको अपने मतलब राउंड द ईयर पानी की अवेलेबिलिटी मिलेगी, और उसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा, उसमें कोई गंदगी भी नहीं होगी, और वो उसका बेटर इट इज़ बेटर इट कैन बी बेटर यूज्ड फॉर कंजम्पशन. तो ये सारे पॉइंट थे, इसकी इंपॉर्टेंस ये थी, और इसी को देखते हुए अब समझ आ रहा है कि इससे बहुत बेनिफिट मिला है लोगों को. अब पहले जो 42% लोगों के पास पानी था, अब 70% लोगों के पास पानी अवेलेबल है. तो देयर इज अ ह्यूज चेंज, एंड दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द
पीपल ऑफ इथियोपिया। तो ये पूरा अगर आपको एक क्रक्स समझ आता है, एंड इफ आई प्रेजेंट दीज पॉइंट्स इन माई ओन वर्ड्स, that is what a good press is all about, guys. So what you need is, you only need to understand the purpose of the passage, वो क्या मैसेज दे रहा है आपको। गाइस अगर आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही हैं, मेरी बातें आप तक अगर पहुंच रही है, तो लाइक करना मत भूलिएगा सेशन को, इट्स जस्ट अ थम्स अप बटन। बट इससे क्या होगा, और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंचेंगे एंड दे विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस, राइट। सो दैट इज द लीस्ट वी कैन डू। चलिए तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यू ओनली हैव टू कीप द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पैसेज, याद रखना। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? द क्रक्स, the gist of the passage, that is what we call the abstract. So the gist or the crux of the passage is to be used in your précis, but remember, in your own words, with no grammatical mistake, no spelling error, no structural error, and that is what will lead you, or that is what will fetch you the maximum marks possible. Now, remember guys, you have to select the most prominent phrases and sentences from the paragraphs. सिर्फ उस पॉइंट को उठाइए हर पैराग्राफ में से जो काम की बात है, बाकी जो इलेबोरेटिव पॉइंट है उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो द मेन पॉइंट जो है उस एक पैराग्राफ में, देखो पैराग्राफ कब चेंज होते हैं गाइस? when another idea, a new tangent, a new aspect is discussed, right? So whenever you see a new paragraph, मतलब इसमें कोई नई, कोई डिफरेंट बात है, तो उसमें से जो की पॉइंट है वो निकालिए। फिर अगला पैराग्राफ पढ़िए, उसमें जो की पॉइंट है वो निकालिए, और यू करते करते आपको सभी पैराग्राफ्स के की पॉइंट्स निकालने हैं। एंड देन यू हैव टू चूज कि कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे मेंशन करने चाहिए इस वर्ड लिमिट में, और किससे जो प्रॉपर मैसेज है वो ऑर्गेनिकली कन्वे होगा टू द इवेल्युएटर। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपने वो सारे क्या बोलते हैं, अपने प्रोमिनेंट फ्रेजेस और की पॉइंट्स निकाल लिए हर पैराग्राफ से, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म अ चेन ऑफ की पॉइंट्स एंड कनेक्ट देम टू मेक एन ऑर्गेनिक होल। कि अब उन सारे पॉइंट्स को एक ऑर्गेनिकली तरीके से, ये नहीं कि बस उनको एक के बाद एक लिख दिया, उनको कनेक्ट करो। इट शुड फील लाइक अ शॉर्ट स्टोरी टू यू। मैं आपको गाइस बड़े सिंपल तरीका बताता हूँ कि प्रेसी को कैसे इमेजिन करना है आपने। गाइस मैं अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो गाइस मान लो आप एडिटोरियल रीडिंग तो डेली करते ही हो, आई एम श्योर, राइट। मान लो आपका छोटा भाई है या छोटी बहन है, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो आपने उनको सजेस्ट किया कि आप भी डेली एडिटोरियल पढ़ा करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक दिन क्या हुआ, आपके छोटे भाई या छोटी बहन ने एक एडिटोरियल पढ़ा, अब उसको समझ नहीं आया ज़्यादा कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो वो आपके पास आए, उन्होंने आपको बोला कि भैया या दीदी, मैंने पैसेज, मैंने एडिटोरियल पढ़ा था और मुझे समझ नहीं आया इसमें क्या था। अब वो आपको आपकी हेल्प मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे पढ़ के समझाइए क्या बात हो रही है। तो अब आप क्या करते हो गाइस, आपने पूरा एडिटोरियल पढ़ा फटाफट से, एडिटोरियल पढ़ के आपको समझ आ गया, क्योंकि यू आर वेल रेड एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो आपको पढ़ के समझ आया। आपने अब पढ़ने के बाद, अब आपने अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को, अपने सिबलिंग को जब आपने एक्सप्लेन करना है ये चीज़, तो क्या आप एक एक लाइन को डिकोड करोगे उसके लिए, देख पहली लाइन में ये लिखा है, देख दूसरी लाइन में ये लिखा है, नहीं ना। आप क्या करोगे, पूरा पैसेज पढ़ के उसको समझ के उसको एक ब्रीफली समझाओगे कि देख भाई इस पैसेज में क्या बात हो रही है, कि इथियोपिया एक अफ्रीका में कंट्री है जो बहुत गर्म देश है, वहाँ पे पानी नहीं होता क्योंकि गर्मी रहती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉट आते हैं, डेवलपमेंट भी इतना नहीं है। सुना भी होगा इथियोपिया बैकवर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में काउंट किया जाता है, राइट। तो उसकी बात हो रही है कि इथियोपिया में वाटर क्राइसिस था बहुत सालों से। सिर्फ 100 में से सिर्फ 40 लोगों के पास पानी अवेलेबल था पीने का। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि उनको पानी लेने जाना पड़ता था पीने के लिए। तो स्कूल में कैसे जाएंगे अगर वो पानी लेने जा रहे हैं 10-10 किलोमीटर दूर, 20-20 किलोमीटर दूर, राइट। तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पे। और पानी नहीं है तो फिर लोग मरेंगे भी, सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट आ रहे हैं, खाने को नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो इसके लिए उनकी गवर्नमेंट ने नई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिसमें वो एक तो पॉन्ड हार्वेस्टिंग और एक रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को एक्सप्लोर किया गया है। पॉन्ड हार्वेस्टिंग फिर भी ठीक है, लेकिन रूफ टॉप गजब की चीज़ है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम रखा है उन्होंने माई डैम एट माई होम, राइट। कि अपने घर पे ही मैंने अपना डैम बना लिया, अपना पानी सेव कर लिया अपने लिए। तो जो पानी वहाँ सेव हुआ वो मैं अपने घर में यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बच्चे पढ़ भी सकते हैं। तो ये ऐसे करके एक्सप्लेन करोगे ना आप उसको, एक एक लाइन तो नहीं एक्सप्लेन करोगे ये है ये है ये है। तो इसी को ही प्रेसी बोलते हैं, जो आप अपने छोटे भाई को ब्रीफली जो आप समझा रहे हो, मोटा मोटे जो पॉइंट्स बता रहे हो, इसी को ही आपको प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। अब ये क्यों करवाई जाती है एग्जाम में गाइस, वो भी समझे, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। गाइस एज एन अवार्ड ग्रेड ए मैनेजर आपको
समझ होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट के बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, जब आप कोई चीज़ सुन रहे हो तो वो फिल्ट्रेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि ये बात वैलिड है और ये बात इररेलेवेंट है, ये बात को हम अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कंपोजिशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो वो करवाते हैं आपसे एग्जाम में। तो आपको समझ आ रहा है गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट प्रेसी राइटिंग एंटेल्स। चलिए अब आपको समझाता हूँ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ड्यूरिंग द एग्जाम। समझिएगा इस आपको सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझ आ गया है प्रेसी का, विद द टाइटल ऑन टॉप, ऊपर एक टाइटल देना है शॉर्ट छोटा सा, और फिर नीचे एक पैराग्राफ में पूरी प्रेसी लिखनी होती है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, अगर आपने मल्टीपल पैराग्राफ्स बना दिया, अगर आप टाइटल भूल गए, याद रखना 7 से 8 मार्क्स कट जाएंगे आपके। टाइटल के 4 मार्क्स होते हैं, स्ट्रक्चर के 3 से 4 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आप 30 में से अगर आपके 7 मार्क्स यहीं डिडक्ट हो गए तो यू आर ऑलरेडी डन, फिर कोई फायदा नहीं है इस सब करने का। तो ध्यान से समझना फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। और फिर आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट सेंटेंस कैसे स्टार्ट करना है अपने प्रेसी को। स्टार्ट द प्रेसी विद द मेन आइडिया, द सेंट्रल थीम है ना, फर्स्ट सेंटेंस प्रेसी का वो होना चाहिए आपका, जो मेन पॉइंट है पूरे पैसेज का, जो मेन थीम है कि भाई पूरे पैसेज में क्या बात हो रही है कि इथोपिया हैज बीन स्ट्रगलिंग विद वाटर क्राइसिस फॉर डेकेड्स एंड नाउ इट इज एक्सप्लोरिंग न्यू मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, namely pond water harvesting and rooftop harvesting, which is helping them improve their water statistics. तो ये मेन पॉइंट जो है ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट रखूंगा अपनी प्रेसी का। सो स्टार्ट द प्रेसी विद द मेन आइडिया सो दैट द इवेल्युएटर कैन क्विकली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द प्रेसी। जैसे हम इंट्रोडक्शन करते हैं ना, इंट्रोड्यूस करते हैं, ये नहीं कि जैसे एक्चुअल पैसेज में दिया आपको वैसे ही स्टार्ट करना है, आपको मेन थीम से स्टार्ट करनी है अपनी प्रेसी, जो मेन आइडिया है पूरे पैसेज का, दैट शुड बी योर फर्स्ट सेंटेंस। देन टेक वन की पॉइंट फ्रॉम एवरी पैराग्राफ विच कैन मोस्टली बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आइदर द फर्स्ट और द लास्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ। मेन जो आइडिया होता है या तो फर्स्ट सेंटेंस में होता है गाइस, या लास्ट में दिया होता है, तो उनसे आपको एक की पॉइंट मिल जाएगा। सो टेक वन की पॉइंट फ्रॉम एवरी पैराग्राफ, में एक की पॉइंट निकालो और उसको अपना लिख लो अपने रफ पीस ऑफ पेपर पे। नाउ वंस यू हैव टेकन आउट ऑल द की पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग अ प्रेसी, मेक अ suitable environment where all the points can be described and discussed equally। वही ऑब्जर्विंग प्रोपोर्शन वाली जो मैंने आपको बात की थी ना, यू हैव टू ऑब्जर्व प्रोपोर्शन, कि हर पॉइंट को प्रॉपरली डिस्कस, मतलब इक्वली डिस्कस किया जाना चाहिए, दैट इज ऑब्जर्विंग प्रोपोर्शन। ये नहीं कि एक पॉइंट को बहुत 4 सेंटेंस में लिख दिया और फिर दूसरे पॉइंट को आप आधे सेंटेंस में नहीं दे पा रहे क्योंकि आपने उसको मैनेज नहीं किया। सो काउंट द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, काउंट द एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स एंड देन ऑब्जर्व प्रोपोर्शन। याद रखना हर पॉइंट को इक्वली डिस्कस किया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा और एक चीज़ को बिल्कुल ही नहीं। Now, next point, guys. As a press is concise, compress it by using connecting words. उनको connecting words से conjunctions use करो, guys. However, consequently, subsequently, therefore, in addition to, looking towards, yeah, in, for example, besides, or let's say in addition to, along with, beside, so all use these conjunctions to make your pressy look organic। ये नहीं, वो जर्क नहीं फील होना चाहिए कि एक सेंटेंस में ये अगला सेंटेंस ये बात कहाँ से आ गई, फिर ये बात कहाँ से आ गई, फिर ये बात कहाँ से एकदम से जुड़ गई इसमें। तो इट शुड नॉट फील लाइक अ जर्क, इट शुड नॉट फील लाइक ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे, यू शुड मेक इट ऑर्गेनिक बाय यूजिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन यूज करने से जो कॉन्वर्सेशन होती है वो ऑर्गेनिक लगती है। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, this leads to consequently, subsequently, so start using conjunctions to make your pressy look organic। So as a pressy is concise, you can also compress it and you can also connect it by using conjunctions। So compress it by using conjunctions and make sure that space is available to retain the important points, data and keywords and the concepts। तो याद रखना उनको conjunction use करो, एक ही sentence में अलग अलग बनाने की बजाय। however, this is for example उसने बोला कि pond harvesting, pond water harvesting and rooftop harvesting are two novel methods of water retention in Ethiopia, but rooftop water has proved to be very productive and healthy for consumption as well at the same point, at the same time frame, yeah, at the point of time। So आपको you have to use conjunctions to present different points। Now
Read this, guys. Removing irrelevant data or sentences as important as writing the relevant points. So thus, identify the superfluous data and facts and keep only the core idea of the work in the précis. This is very important कि जो ये जो मतलब सुपरफ्लुअस डेटा मतलब अनवांटेड जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, जैसे वहां पे अभी हमने देखा 42%, 70%, 69, वो सारा अगुंडा और वो सारे नाम सब सब छोड़ दिया, सिर्फ जो मेन थीम थी उसको हमें ध्यान में रखना होता है. सो आइडेंटिफाई द सुपरफ्लुअस डेटा एंड फैक्ट्स and remove them and keep only the core idea of the passage in your précis. Now, very important point, guys. Read this. Do not form any personal opinions, remarks or criticism in a précis. आप अपने एंड से कुछ ऐड नहीं कर सकते वहां पर, गाइज याद रखना. इट शुड बी एग्जैक्टली अ ब्रीफ और मिनिएचर्ड रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल पैसेज. मतलब आपको ये सोच के चलना है कि वो जो पैसेज है वो भी आपने ही लिखा था और अब उसकी जो प्रेसी बना रहे हो वो भी आप ही बना रहे हो. तो ये नहीं कि द पैसेज टॉक्स अबाउट और द ऑथर वांट्स टू, ऐसे नहीं करना आपको. आपको यही सोच के लिखना है कि आप ही ऑथर हो उसके और आप ही अपनी बात रख रहे हो. तो इट शुड बी अ रेप्लिका, मतलब मिनिएचर्ड रेप्लिका ऑफ द पैसेज. सो यू कैन नॉट ऐड एनी ओपिनियन, रिमार्क्स और क्रिटिसिज्म इन अ प्रेसी. नेक्स्ट स्ट्रिक्ट नो नो इज यू कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज. देखो गाइस, कीवर्ड्स तो सेम रहेंगे ऑब्वियसली. इथियोपिया, वाटर क्राइसिस, वाटर मैनेजमेंट, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, ये चीज तो चेंज नहीं हो सकती, ये तो कीवर्ड्स है. लेकिन जो प्रेजेंटेशन है ना वो आपको अपने लैंग्वेज में करनी होती है. कि वहां पे लिखा हुआ है कि इथियोपिया हैज बीन क्या बोलते हैं फाइटिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस फॉर द डेकेड्स. आपको क्या लिखना है? वाटर क्राइसिस और द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस हैज बीन एन अंडरलाइंग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द पीपल ऑफ इथियोपिया. बात आप वही लिख रहे हो लेकिन अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करके लिख रहे हो. दैट इज व्हाट प्रेसी राइटिंग इज ऑल अबाउट. सो यू कैन नॉट यूज you cannot replicate sentences from the passage as they are. You have to use them very carefully. You have to use them very thoughtfully, very wisely in that manner. Now guys, remember, use synonyms. Guys, ये बड़ी important, बड़ी helpful trick है. Use synonyms to present the sentences in your own words. When you are presenting your précis, use your own words. Okay, चलिए, तो ये थे गाइज आपके do's and don'ts for your précis writing. Now, what should be your time management for your précis? Guys, expected word limit usually it is between 150 to 170. सिर्फ लास्ट ईयर एक सरप्राइज हमने देखा है 120 वर्ड्स वाला, लेकिन उससे पहले हमेशा 2023 में, 22 में, 21 में, 19 में, 20 में, सब में गाइज वर्ड लिमिट 170 180 रहती है. इस बार सरप्राइजिंगली 120 थी, जस्ट टू सरप्राइज द स्टूडेंट्स. इस बार फिर से शायद 170 होगी या 150 या 180 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है फॉर दैट मैटर. सो वो चेंज करता रहेगा आपको सरप्राइज करने के लिए. बट वो आपको ट्रिक याद है ना, अपने एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट कर लो कि आप ऑन एन एवरेज, ठीक है, आप कितने वर्ड्स लिखते हो, एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पर सेंटेंस, ये काउंट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए. ठीक है, हमेशा ये बहुत ही सेफ और साउंड ट्रिक है गाइज. ठीक है, इसमें आपको कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा. अगर मुझे पता है कि मैं ऑन एन एवरेज 15 to 17 वर्ड्स लिखता हूँ, तो मुझे पता है अगर 170 वर्ड की प्रेसी आ गई या 150 वर्ड की प्रेसी आ गई तो मुझे कितने सेंटेंसेस बनाने होंगे. सो प्लान अकॉर्डिंगली गाइज. दिस इज अ वेरी सेफ ट्रिक. Second, what is the weightage for Prezi? 30 marks out of 100. So 30 is a very, it's a very scoring point. It's a very easily doable section. आपको बस करना ही क्या है यार, पैसेज पढ़ के उसको रिफ्रेम ही करना है अपने वर्ड्स में. कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है. पैसेज भी सामने गिवन है, फ्रेम आपके सामने, रेफरेंस पॉइंट भी सब कुछ है. ठीक है, लेकिन आपको उसको हैबिट में आना है, उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करने की. टाइम अलॉटमेंट क्या होना चाहिए गाइस? आइडियल टाइम अलॉटमेंट फॉर प्रेसीज 20 to 25 minutes. What should be a breakup of your time? First 7 to 10 minutes to read the passage carefully. अगर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लंबा है तो 10, इजी है, डुएबल है तो 7. फिर नेक्स्ट 10 to 15 minutes to draft your précis. Jot down the points and frame them in your own words. And then last 1 to 2 minutes to proofread your answer. So that should be the time management of your answer. And guys, if you don't know, there will be a word counter on the screen, there will be a timer on the screen. So word counter will keep on telling you how many words have you written, and the timer will keep on telling you how much time has elapsed. So you don't need to keep track of anything, you just need to focus on practicing writing a good précis out there.
So that is your time management for your Prezi. Now, 5 mistakes not to make while drafting a Prezi, guys. Please keep them in mind. First, no typos or grammatical errors. This basically applies to every question in English language, in descriptive English part. Be it for essay, be it for Prezi, be it for letter writing. There should be minimal typos or grammatical errors in your answers. Then make sure that you stick to the word limit. If the word limit is 170, you have to target to finish your Prezi between 160 to 170. So the and you will not be able to write more than 170, guys. That is clearly mentioned in the paper. So the interface will not allow, if the word limit, highest word limit mentioned is 170, so you'll not be allowed to write more than 170 words. So you have to finish it before 170. So what should be the ideal targetable word limit? Between 10 words. So 10 words or as close to the word limit as possible. So if the 170 is the word limit, anything between 160 and 170 is the ideal word limit. And you can't go above, and anything beyond that, it starts feeling like you don't have, ample words, so you have not planned your Prezi to present it in a logical manner. Guys, please follow the structure. Structure carries 4 marks in your paper. So 4 marks will be deducted if you do not follow the structure. What is the structure of a Prezi? You write a title on the top. First, you write the title, and below the title, the whole Prezi is written in one paragraph itself. So, the whole Prezi is written in one paragraph. You do not make multiple paragraphs in a Prezi. That is what the title, that is what the structure of a Prezi is. Title on top and one paragraph itself. Now guys, another important point, guys, please do not add any information that cannot be inferred or that is not even mentioned in the passage. जो पैसेज में मेंशन भी नहीं है वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते. मतलब आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन यूज करनी है जो पैसेज के अंदर गिवन है, या उसी से आप जो भी इन्फर करना है वहीं से इन्फर करोगे. लेकिन मान लो वहाँ पे आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की कोई बात है, आपको मालूम है, लेकिन साउथ अफ्रीका का कोई मेंशन नहीं था उसके अंदर, तो आप वहाँ नहीं लिखोगे साउथ अफ्रीका के बारे में, कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा वहाँ पर. सो यू कैन नॉट ऐड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बियॉन्ड द प्रेमिसेस ऑफ द पैसेज. द Prezi शुड बी लिमिटेड टू द स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द प्रेमिसेस ऑफ द पैसेज itself. It should not go beyond the beyond the contents given in the passage. So उसके beyond आप नहीं लिख सकते, खुद से कुछ ऐड नहीं कर सकते आप वहाँ पे, याद रखना. और एक और चीज, you cannot copy and paste sentences from the passage, or you cannot add or any you cannot criticize something or add personal opinions to your Prezi. It has to be a replica of the passage as it is. Even if you agree or disagree with it, doesn't matter, right? You just need to take out the core points and present them in your own words, as if that is an exercise that you have to undertake. So no copying and pasting from the passage. You cannot reuse text from the passage, or you cannot add any personal opinions in your Prezi, and you cannot go beyond the premises of the passage as well. You have to restrict yourself to the contents of the Prezi only. So these are the 5 very common mistakes that students make. They do not bother about grammatical mistakes, or they forget the word limit, or they forget the title, or they make multiple paragraphs, or they add something which is not given in the passage, or they copy and paste sentences from the passage. These are 5 very common mistakes that students make. Make sure you do not do them, guys. You do not repeat these mistakes. They have been clearly warned. So do not do that, otherwise marks will be deducted for it. Okay. Now guys, now this is what a bad Prezi looks like. Let me show you guys. So see, there is no title in the Prezi here. Where is the title? So you've lost -4 marks. Then look at the mistakes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, this whole sentence is incorrect. So this again 8. That means you lost again 2 marks for this. Then look at the structure, guys. Multiple paragraphs. You again lose 3 marks for this. Then look at the specific details that are mentioned. Data points. This seems like that you have copied the information from the passage. So you do not use these specific details. Again, you're losing 1 mark because of this, 1 or 2 marks because of this. So if you lost 4 plus 2, 6 plus 3, 9 plus 2, if you've already lost 11 marks because of poor structure and poor presentation skills, you do not know what Prezi is all about. If you lost 11 marks out of 30, I don't think it's worth it then. I don't think you should be worried about the result after that, because 10 marks, 11 marks can't be, you can't cover that advantage
from any angle in such a competitive exam. So make sure you do all the basics right, and then, as I told you in my previous lecture, you don't have to be Shakespeare, guys. Just write simple plain English, but it has to be well presented with no error, and it should follow the structure and the demand of the question. If that is done, you will score the highest marks possible. Let me show you another example of a bad pressing, guys. Look, see, this is not a title. This is basically a sentence in itself. So you do not write such long titles. You do not do this, guys. This is, poor structuring of your Prezi. You do not leave any space. Then multiple paragraphs. Again, wrong structure. Word limit is not followed here. Again, another mistake. I'm sure I'm 100% sure this is at least 150 or 160, 170 or 180 words. So word limit has been exceeded here, or maybe more than 200 words. So word limit has been exceeded. Then look at the mistakes that the guy has made. Look at the specifics that he has used in the Prezi. This is what a bad Prezi is all about, guys. You do not do that in your answers. If you've made 10 mistakes, you're losing marks. If you do not follow the structure, you're losing marks. If you are you can, guys, you can pause this video and look at this. You can read the three Prezis. These are two bad Prezis, and then let's look at a good Prezi. Then you will see the difference between a good Prezi and a bad Prezi, guys. This is what we call a good Prezi. Good, decent title, properly structured, no grammatical mistake at all, no specifics taken from the passage, using conjunctions while writing in spite of this, however, though, right, and presenting in your own words. This is what a good Prezi should look like. Now I think I've made amply clear what Prezi writing entails and what you should be doing in your answers for your final exam. So I hope this will give you clarity into what Prezi writing holds. And guys, this is easier said than done. It takes a lot of practice, no doubt about it. Okay, so start practicing Prezi writing, because it's a very scoring section, and it is also going to help you in the long run. And guys, I have another video. I'll bring out another video on 18th of January, which will be how to write a letter like a pro. So I've already taken up a session on how to write an essay like a pro. You can watch it if you haven't yet. You can watch this session for Prezi writing, and I'll be bringing another session on 18th of January for letter writing as well. So I hope you watch all these sessions and prepare accordingly, guys. Alright, so that was all about Prezi writing, what it holds, what it entails, and what should be your strategy, what are the tips and tricks of Prezi writing, and everything that you needed to know has been discussed in this video. Now I'm going to give you a homework passage, guys. What you need to do is take it as a homework, just as a homework for yourself. So read this passage and make a Prezi out of it and paste your Prezi in the comment section of the video. If you do that, I'll be able to read it and I'll definitely look at your answer, guys. So this is a passage. So this was basically about how digital marketing, I mean, marketing has changed over the decades. Earlier, we used to look at billboards and pamphlets and boardings and hoardings and all that. But today, it's all about digital marketing. Today, we don't see hoardings or boardings on the roads today, do we? Because the world has digitalized in the recent years. So that is what the passage talks about. So read the passage, guys. You can take a screenshot, or if you want the PDF of this session, the PDF of this session is will be provided on our Telegram channel as well. The link for our Telegram channel is given in the description of the video. You can join our Telegram channel for absolutely free, and you can get all these PDFs for absolutely free of cost, guys. So this is the passage, and that's the third slide of the passage. So read it up and make a Prezi out of it. Okay, and then compare it with the sample answer that I'm providing you here. Don't read the answer first. Read the passage, create your own Prezi, and then compare it with the sample answer that I'm providing you here, and that will give you the right yardstick to compare your answers with the good answers that are provided to you. So this is the passage, and this is the solution for your sample answer for your passage. So guys, you can take a screenshot, or you can also download the PDF from our Telegram channel. Okay, so guys, that was it for your Prezi writing. But before we wrap up the session, I would like to inform you about our special courses that we have launched for you, guys. Now guys, what you have to do is you just have to visit your Google. Just go to your Google and just type edutab.in. So as you go to Google, just type edutab.in and you'll land on our homepage.
So this is what our homepage looks like, and you'll see all the courses offered to you. So second tab is NABARD Grade A courses. Click on this, scroll down, and you'll see all the courses that are available to you. Now guys, this is a phase 2 test series. This is going to be very impactful for you at this stage, because in this test series you have your solved previous year questions for phase 2. NABARD exam, chapter wise mock tests are given, current affairs mock tests are given to you, and full length tests are provided to you for your practice part. And this is a live plus recorded clash course, guys. This is already going on. This is already ongoing at this moment, so you can join it. Now it is live crash course. You can attend the lectures live, or it will also be available to you in recorded form later on as well. So if you are a working candidate, or if you're not able to attend live sessions, you can watch it later on in a recorded manner. So what is provided to you in this course? Live classes are provided to you, solved PYQs are given, chapter wise tests are given, and full length tests are provided to you. And guys, we are offering flat 73% discount on these courses, and the coupon code is JAN73. So JAN73 is the coupon code, discount code for your 73% discount. And you can also look into silver course and gold course if you are preparing for next year, that is 2026. All right. So guys, if you want to know more, you can click on the brochure and you can download all the details. And you can, if you want to know more about these courses, just click on know more and you'll get to know the details about everything that you need to know. Live classes, chapter wise test, everything is given to you in detail. You can read it here, what all it entails. You can look into this, what general awareness live classes look like, ARD, descriptive English, and even guys, you can even explore our free course content with the help of these demo lectures given to you. General awareness, descriptive English, ESI, ARD. So all these are given to you, and you can look further into our courses and prepare yourself better for the exam. So guys, that was it for your Precis Writing session. I hope this helps you in your preparation and in your journey ahead. And I'm sure you will take the benefit and you will improve your presentation from this. So guys, if you have any doubts, if you have any queries regarding anything at all, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241. Or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. And come join us, streamline your preparation and make your journey productive and fruitful for yourself. And the best part, guys, see, I haven't told you the best part. The best part about the full length tests is we are going to evaluate them for you. So you have 5 full length mock tests exactly based on your paper for ARD, ESI and English. So exactly the simulation of your paper, and you write your answers exactly in a time bound manner, just like your exam. And then we will evaluate every answer. We will give you our feedback, and we will provide you detailed insights into your answers and what needs to be improved in your answers. So that will be provided to you in these courses. So come join us and join these test series or live crash course and get benefited from them. So at this point of time, what you need is evaluation and personalized, customized feedback for everyone, right? For every answer. And that is what we are providing you on our platform. So come join us, take benefit of these evaluation metrics, and get benefited from all the feedback that you are going to get in those 5 full length mock tests that will be provided to you in these courses. So this is a golden opportunity, 73% discount, and all the benefits that you can reap from here. So all the very best. God bless you. Keep up the good work, and I'm sure you will come out with flying colors. So have a good day and happy learning to all of you guys.